Rahim. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be 3 to 4 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. For understanding the background of the economies of scale with the basic idea, the more you make something, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे तो उसकी एवरेज कॉस्ट पर आइटम कम हो जाएगी. अगर आइटम प्रोडक्शन कम होगी, नंबर ऑफ आइटम्स कम होंगे, उसकी एवरेज कॉस्ट पर आइटम ज़्यादा होगी. वॉलमार्ट की एग्जांपल लेते हैं कि जो अनबीटेबल इकोनॉमीज हैं ऑफ स्केल. Whereas the Walmart's example, why we are giving the Walmart example, it has a bigger setup. Like they are working in 28 countries, they have more than 2.1 million employees, more than so many countries, population, and Walmart owners are from bottom to top. There's just 10, 9, 8, 6, 7, last 4, 5, the top billionaires of the world. So they are earning and they are putting their effort into the Walmart's system. So that has a bigger impact on the economies of scale in the US. What happens with that? Bulk input, spread fixed costs, specialization, cheaper loans they can get, and improved processes. We're discussing internal economies of scale in the long run. So looking at different examples here, technical economies, that is benefits of containerization. Containerization actually has a bigger impact on the technological revolution in 1970s. Purchasing economies in bulk buys like Walmart, like Gary or Metro in Pakistan's contracts, because they buy in bulk. So Pepsi, Coke, Lever Brothers, the other big manufacturers, they bang on them, they trust on them because the bigger chunk of their production goes to these big sellers, their warehouses. Managerial economics using specialized staff. Financial economies, they are lower interest rates on loans. Risk-bearing economies from diversification. So in last we were discussing the network economies, build networks of suppliers and customers. So again giving example of these big warehouses, big carports, जिनके जरिए ज़्यादा बल्क फैक्ट्रीज उसे उठाया जाता है कि वेयर हाउसेज में हाउस में रखा जाता है, फिर रिटेल मार्केट में होम कंज्यूमर के लिए उसको सेल आउट किया जाता है. तो यहाँ पर प्राइस का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है. यहाँ पर जिस प्राइस के ऊपर आपको लेविस के पास के प्रोडक्ट मिलेगी, जिस प्राइस के ऊपर आपको लीवर ब्रदर्स या प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट मिलेगी, आम मार्केट में उस रेट में मिलना बहुत मुश्किल है. क्यों? बल्क क्वांटिटीज उठाते हैं. बल्क क्वांटिटीज जब उठाएंगे तो यूनिट को स्पेसिफाई करना, यूनिट रेट को लोअर कॉस्ट के ऊपर लेकर आना, बीच में से मिडल मैन थर्ड मैन निकल जाएगा. डायरेक्ट फैक्ट्री से बल्क शिपमेंट थ्रू कंटेनर्स इनके वेयर हाउसेज में आती है, जिसकी वजह से प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है और ये इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ड्राइव करता है. व्हाट आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है. उसके अंदर यूनिवर्सिटी रिसर्च का इम्पैक्ट मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मौजूद हैं, एलोकेशन ऑफ सप्लाईज की बात आ जाती है, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्किल वर्कर की बात आ जाती है. एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल का इम्पैक्ट होती है. Agglomeration economies are important. Businesses in similar industries cluster together. Similar industries, fan industry, sports industry, automobile industry, similar industry की बात हो रही है. And attract an influx of skilled talent
which provides human capital to expand businesses. In order to marshal the economies of scale, have two components: external economies, internal economies. External, we have just discussed what are the internal economies, which factors come into it. So यहाँ पर हमारे पास लेबर है, टेक्निकल है, मैनेजरियल है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज हैं. We just to have a clear idea on the basics of it. Internal economies में ये factor मैटर करते हैं, and this is the definition given by Marshall. In next lecture, we will be discussing the internal and external economies of scale, and we'll look at the differences in between, and we'll also put up एक बड़ी एग्जाम्पल के साथ हम इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग आ सके स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो हम मिलते हैं लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 आसाम.